been able to have an alliance with the BJP in Punjab. There were many times ups and downs and various thinking how we should go ahead about it and how we should move ahead. But finally, the consensus that emerged within our party, and I think also in Teensar Saab's party, he will of course say it on his own and tell you all what he thinks. The feeling was that for the sake of stability of the country, for the sake of our own, as the President has mentioned, on the security of the nation, as the area which he has already mentioned, 600 kilometers we have from Pathankot to Fazilka, which is for me, it was a formidable occasion to deal with it. I remember that there was a time which used to come when we used to give, there used to be these people going across the rivers, dropping off whatever they had to drop. Then there was these wires which were put up, where people used to go tunnel under the wires and give all these weapons and whatever. And let me tell you, and I'm not saying this for any other reason, this has been my stand from the very beginning, that the amount of weaponry that has come in, what the President has mentioned, perhaps he has mentioned too little. I can tell you that I have had, in the course of my last 4.5 years of being Chief Minister of Punjab, I have had at least 100,000 rifles, nearly 1,000 rifles, about 500 pistols. I've had RDX. I have had ammunition, perhaps 1 lakh rounds of ammunition. I have had everything under the sun, including drones. Now, drones we used to come at one time and make these drops. And this was last year when we started, just before the COVID period. That was the time when it used to come. And I used to then wonder that what is the objective of this whole exercise. And then we followed it up, and we followed where these drones were being dropped. It was the BSF, it was us, the Punjab police, and it was our own people who were giving us information. And we found that they were being dropped at particular points. Now, what is an object of a drone? An object of a drone is to deliver ammunition, deliver weaponry, deliver whatever is necessary for a purpose. And what is that purpose? The purpose is to carry out some sort of nefarious activity. And that is what happened to us there. And it was not only that. First they used to jump across the river. Then they used to go to about 6 to 7 kilometers away. And then finally, when Government of India took a decision, which was the correct decision, that they should be 50 kilometers from the border, should be kept there, it was considered absolutely essential. And the reason, I'll tell you why. Because on the 20th of July, that is just about 2 months before I was given the sack, and that 20th of July, the delivery of those weapons went up to 31 kilometers. Now 31 kilometers, and then you have a scenario developing when the technology is improving. You've got drones coming in, which can take a higher payload. It can take a higher distance it can cover. And it was quite apparent to us that this was only a beginning. And we were eventually going to go up to 50 60 kilometers, 70 kilometers, and whatever it else may do. And when that happens, what is the purpose? After all, when a person delivers something, it is for a purpose. It is for weaponizing some place, for using it for some purpose, and for seeing that it is used in some nefarious activity which Pakistan wanted to do. And this is what was concerning us. And I told the people, when they came into the Vidhan Sabha and they made a big row about it, कि 50 किलोमीटर कर दिया वगैरह, मैंने कहा भाई सुनो तो सही कि क्या हो रहा है.
अपने बैंक देखो तो सही क्या हो रहा है on our borders. I joined the army in 1963, and in 1964 I was in the Western Command, and from Western Command was in Simla in those days. From Western Command till the time that the war came in 65 and then 71 came and all, there was not one day where there was no firing taking place and no soldiers of ours getting killed. Which is why I said so to Mr. Sidhu. What are you going around hugging around these people who are killing our people every day? Every day. There's not a day that passes that our boys are not shot. And since the day I took over in 1917 and till the day I left it on the 18th of this month of September, I had 83 of my soldiers of Punjab being killed. I'm not talking about Himachal Pradesh, about Garhwal, about Rajput regiment or some other regiments which exist. Actually, this was taking place. And this is where people don't understand the urgency of this business. We need it. We need, as the President has said, we need an economic development. We need people to come in and to invest in Punjab so that Punjab's economy can be boosted. And we are in a position, and we have today, I have also made up our manifesto, which is there, which we have passed on to the BJP leadership. And I'm sure Dinsha Saab is also doing it. And then hopefully we'll all put together and come to a common minimum program which we can utilize for Punjab. That is basically what I had in mind to say. But if there's anything you wish to ask, you're free to do so. कुछ पूछना आप हो? अच्छा, sorry. Thank you, sir. साहब अब हमको माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, नेशनल अध्यक्ष बीजेपी, हमारे सहयोगी और पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और पंजाब के प्रभारी बीजेपी की तरफ से शेखावत साहब, हमारे प्रेसिडेंट पंजाब के बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री अश्विनी जी और देश के दो और मंत्री सत्कारयोग पुरी साहब और सोम प्रकाश जी जो पंजाब से संबंध रखते हैं, और मेरे प्रेस वाले बहनों और भाइयों, नड्डा साहब ने बहुत डिटेल पे आपको बहुत कही है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। उसके बाद कैप्टन साहब ने अपने तजर्बे की बात, कैसे देश को खतरा है, उनकी बात कही है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा गठजोड़ क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है, वो इसलिए कि पंजाब की सिचुएशन बहुत ख़राब है। कुछ ये हुआ कि पंजाब इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री जा रही है, एग्रीकल्चर में भी बहुत कर्ज हो गया, लोन बहुत 3 लाख से भी ज़्यादा लोन है, और कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे ये कह सकें कि पंजाब दोबारा अपने पैरों पर लाने के लिए हमने इकट्ठे होकर बात की है। मैं आभारी हूँ नड्डा साहब का और बीजेपी की लीडरशिप का कि उन्होंने शेखावत साहब को पंजाब का प्रभारी बनाया, जो बहुत ही डूंघाई पर सोच रहे हैं और डूंघाई पर जाते हैं और जाने के बाद कोशिश करते हैं कि कैसे ये हल हो सके। दूसरा ये है कि कोई भी इलेक्शन आती है तो कभी हिंदू सिख का मसला, कभी हिंदू मुसलमान का मसला, कभी हटाना वो शुरू कर देते हैं। जो हमारे भाईचारे की एकता है जिसको हम कहते हैं, उसको ठीक रखने के लिए हमने फैसला किया कि हम इकट्ठे तीनों पार्टियों मिलकर करेंगे और पंजाब का माहौल ठीक रखेंगे, इलेक्शन ठीक होनी चाहिए। और इसके अलावा हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने बहुत मांगे हैं, जो पहले तो लेट आए ठीक है, लेकिन किसानों की जो एक्ट थे जिसके लिए बहुत 1 साल तक
लड़ाई चली तो उसको उन्होंने विड्रॉ किया। और ख़ास करके मैं ये भी कहूँगा कि सिखों के लिए भी उन्होंने, जैसे नड्डा साहब ने कहा कि वीर बाल दिवस, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे, छोटे साहबजादे हैं, जितनी बड़ी उनकी कुर्बानी है, शायद इतनी छोटी उम्र में किसी की ना हो। किसी ने 70 साल हो गए, 75 साल, किसी ने याद नहीं किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, करतारपुर लांघा किया और ब्लैक लिस्ट खत्म की, और भी बहुत बातें हैं। मैं उसको सभी पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम बैठ के तय करना भी चाहेंगे, इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन के बाद। कुछ सिखों में, क्योंकि पंजाब में सिख बहुत तादाद में हैं, सभी बाहर के सिखों का भी कोई ना कोई कनेक्शन पंजाब में है, तो चाहेंगे कि उनकी जो डिमांड है कि हमने मेरी पार्टी ने होम मिनिस्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिए दो, जिसमें ये था कि जो सिख कैदी अपनी सज़ा पूरी किए हुए हैं उनको आप छोड़ दें। बड़ी देर हो गई, 20-20 साल, 30-30 साल से बैठे हैं वे जेलों में। और कुछ और भी हैं मसले जो आज मैं यहाँ पर बहुत दोहराना नहीं चाहता, जो सिखों के हैं, जो काफ़ी कुछ हल भी किए हैं, कुछ रहते भी हैं। इसके अलावा पंजाब की सिचुएशन है, एग्रीकल्चर की बुरी हालत है, बहुत लोन हो गया, किसानों पर भी बहुत लोन है, उसके लिए भी हमने लिख कर दिया है। और इसके अलावा इंडस्ट्री चली गई। मैं, नड्डा साहब बैठे हैं, हमारी कैबिनेट के 3 और मंत्री बैठे हैं, मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो चली गई सारी, उनको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा हल की, क्योंकि कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहा। जो रहा है उस पर जैसे कहा है कि ऐसे चाहे रेत माफिया हो, माफिया चले हुए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, चाहे कोई माफिया हो, वो माफिया चल रहे हैं। उनको रोकने के लिए हम तीनों पार्टी कोशिश करेंगे कि मिलके उस पर काबू पाया जाए। इसलिए पंजाब को बचाना, सरहदी स्टेट है और बैरियर के, जिसके लिए नड्डा साहब ने बड़ी डिटेल बताई है कि इन्होंने पंजाब ने क्या क्या किया है, चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे देश के बाद जंगें लड़ी हों, और चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, तो पंजाब ने लीडिंग रोल अदा किया है। तो मैं चाहूँगा कि हम तीनों बैठ के मिल के उसको सुलझाने के बाद, अगर सरकार बन जाती है, हमारी कोशिश करेंगे, तो हम उसको सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हमने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि पंजाब को बचाना बहुत ज़रूरी है। पंजाब को उस रास्ते पे दोबारा लाना उस पे बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सभी ने मिलकर बात किया है। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों तीनों मिलके इसको दोबारा उसी लाइन पर ले आएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। और क्योंकि बहुत लंबे से बड़ी डिटेल बता दी है, मैं बातें करता रहूं तो अच्छा नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तीनों ही पार्टियों के नेतागणों का, मंच पर उपस्थित सभी नेतागणों का, और आप सब मीडिया के मित्रों का भी, कि आप सब ने आज अपनी इस प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बहुत बहुत धन्यवाद। गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री सवाल पूछो। बैठो सर, एक मिनट। Let me tell you one thing first. How is our association with Pakistan? Patiala had 40% of its population was Muslim. Okay?
So in my last government, Dr. Manmohan Singh sent me to make contact and to try and see if some friendship can develop between Parvez Elahi and us, and सब ये बात ही हुई. तो ऐसे बातें हमारी चलती रही. मेरे कॉन्टैक्ट्स अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड हमारे पुरानी फैमिलीज़ हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर इंस्टेंस फॉर 10 साल के लिए मुस्लिम नवाब लियाकत हयात खान रहे. सो ये ऐसी बातें चलती रहीं. नाउ अबाउट, if I remember correctly, it was 20th of July. Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी. तो मैंने उसको बुलाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर वैसे काम करेगा तो जा कहीं और you can, I can give you power, you want power, you can take it. He said, I don't want power. I said, then you leave my government. I don't want you in my government. ये हुआ. फिर मुझे कुछ I think it was about 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना. ये मैसेज था मेरे लिए. अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना. मैं और कहाँ से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल. ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना. दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम. एंड दैट